See, admission of a new partner. Hey, don't talk, please. Admission of a new partner. Acha, concept of admission of a new partner is clear to all of you. What happens in case of admission? In an existing partnership firm, a new partner is admitted. Suppose in a firm there are two partners A and B. They must have a ratio which is also known as old ratio. And they take a new partner into the partnership. That is the situation which is actually known as admission of a new partner. Now the question is, when a new partner is admitted in a partnership firm, the points to be focused. The first one is determining of new and sacrificing ratio. New and sacrificing ratio. New and sacrificing ratio. New partner comes into the business C. Definitely he will ask for a share. So after admission of C, what would be the new ratio? That we have to decide. If we consider ourselves to be the accountant of this firm, we have to decide okay, what would be the new ratio after admission of C. Sometimes it is given in the sums, then there is no vary. Sometimes it is not given directly in the sums, so we have to calculate the new ratio. So in case of admission, the first point where we have to focus as an accountant, that is calculation of new ratio. And the second thing, sacrificing ratio. New partner C comes and C is getting his share as because A and B has sacrificed. Either A or B or both of them have sacrificed. That's why C has got his share. So there is a question of sacrificing to the new partner. So who has sacrificed how much? That we need to know. And for that reason, we also calculate the sacrificing ratio. And to calculate sacrificing ratio, what formula we used? Old ratio minus new ratio. This portion we have already completed. Is it okay? How to calculate the new ratio, how to calculate sacrificing ratio, various types of sums. Probably we gave one class for this. The second thing we have to focus as an accountant, that is treatment of goodwill. Treatment of goodwill. It means when a new partner is admitted, okay, how goodwill is created. In that situation I discussed you, there are two situations. When a new partner comes, he has to bring a certain amount as premium for goodwill, and whatever the new partner brings as premium for goodwill, that would be shared by the old partners as per their sacrificing ratio. Okay, and if the new partner does not bring any amount, in that situation the effect to be given in the current account of the new partner. Other situation I discussed in detail in that part. Now today we will focus on the third part where we have to concentrate as an accountant, that is distribution of undistributed profits and losses at the time of admission. Undistributed profits and losses at the time of admission. I'm just taking an example for better understanding. Assume there are two partners A and B, okay, and they have prepared their balance sheet as on 31st December 2022, okay. Normally we know on the balance sheet date generally the admission takes place, though there is no such hard and fast rule, okay, as on the balance sheet only the admission takes place. Even mid of the year, any day the admission can take place, but normally as on the balance sheet date. So in the balance sheet you find capital balance is given A, B, general reserve is there. Suppose general reserve of 1 lakh is there. A and B, their ratio is given 3:2. Okay. And in the asset side, various assets are there, sundry assets. And along with that, there is advertisement suspense. Okay. This is the balance sheet. Now, C is coming to the firm. C is joining as a partner. What is the new ratio? They have decided the new ratio to be 2:1. Okay, sir? Now the question is, sir, when this new partner will join as a partner,
how this undistributed profits and losses will be treated. ये जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, जनरल रिजर्व 1 लाख, और एसेट साइड में ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मान लो कि ये 50,000 है, हाउ टू ट्रीट विद दिस? This is accumulated losses, or we can say undistributed losses, and this is undistributed profit. Undistributed profit, there may be PL credit balance, that is profit. There can be PL debit balance, that is also loss. So anything which is at the asset side, that is loss, and anything general is a PL credit balance at the liability side, that is profit. अब क्वेश्चन ये है सर कि when C is coming into the partners, how to treat this general reserve, profit and loss, credit balance, advertisement suspense, PL debit balance, जितना भी undistributed profit या losses बैलेंस शीट में दिख रहा है सर, how to treat that? सर अप्लाई योर कॉमन सेंस. सर ये जो रिजर्व क्रिएट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था? अर्लियर when there was profit in the business of A and B, they kept aside a certain amount as reserve. Now C is coming to the firm and C will be getting a ratio. मतलब नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा सर, उसमें से सी भी 1/5 लेगा, बिकॉज सी का रेशियो कितना है? 1/5. सो शी विल बी क्लेमिंग 1/5 शेयर. नाउ द क्वेश्चन इज, ए एंड बी इज थिंकिंग कि अगर ये जनरल रिजर्व में जो अमाउंट है, जिसका हकदार सिर्फ वो दोनों है, ए एंड बी, सी वॉज नॉट देयर एज अ पार्टनर व्हेन दिस रिजर्व वॉज क्रिएटेड. रिजर्व तो अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही पार्ट है ना सर. सो when C will join as a new partner, what A and B will do? सर ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो भी है सर, this should be distributed among the old partners as per the old ratio. ये जो जनरल रिजर्व देख रहा है ना 1 लाख, क्या करेगा ये अमाउंट? सर ए एंड बी अपनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो बेसिकली लॉस है सर, इसका क्या किया जाएगा सर? ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए एंड बी में. So the rule is this कि whenever a new partner is coming to the firm, बैलेंस शीट में जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस दिखेगा सर, that should be distributed among the old partners as per their old ratio. सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर एक एग्जांपल देके बताते हैं सर. यहां पे जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिख रहा है सर? 1 लाख. अब मान लो कि ए एंड बी ने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है. सी केम एज अ पार्टनर. लेटर ऑन C's share is 1/5. Later on in the next year or 2 years later, she will also be claiming कि ये जो रिजर्व दिख रहा है 1 लाख, इसमें मेरा भी 1/5 है, because at that time she becomes a partner, so she will also be claiming. but originally ये जो 1 लाख जो रिजर्व का बैलेंस है सर, इसका हकदार असल में A and B है. she should not be entitled to this amount. उसको अगर ये अमाउंट रह जाएगा, अगर ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो क्या प्रॉब्लम होगा? इन फ्यूचर सी भी इसका हकदार बन जाएगा, जबकि असल में वो उसका हकदार नहीं है. दैट्स व्हाई द थिंग इज दैट कि जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है सर, जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे पीएल क्रेडिट बैलेंस या एनी टाइप ऑफ लॉसेस वट एवर एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है. middle of the year যদি জয়েন করে, at that time whatever reserve balance was there, then if middle of the year when a new partner joins, at that time you have to prepare a balance sheet. Okay, mid of the year balance sheet you have to prepare, and on that day whatever reserve is there existing in the balance sheet, that also needs to be distributed. सर जब भी एडमिशन होगा उसी टाइम पे जो रिजर्व है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस है सर, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज सर जर्नल एंट्री क्या होगा? मान लो कि यहां पे रिजर्व कितना दिख रहा है सर बैलेंस शीट में? 1 लाख. इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए एंड बी में. कौन सा रेशियो से? ओल्ड रेशियो. ए एंड बी का ओल्ड रेशियो यहां पे दिख रहा है कितना? 3:2. तो सर रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. इसे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज. एंड आई टॉट यू कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करना होता है सर, और जब डिक्रीज होता है तो दैट शुड बी डेबिटेड. So herein for distribution of general reserve or PL credit balance, journal entry क्या होगा सर? General reserve will be debited, या profit and loss का credit balance should be debited to A's cap to B's cap. Okay, so for distribution of undistributed profit, उस undistributed profit को डेबिट करो और A और B जो भी old partners है उनमें old ratio से बांट दो. And for losses sir, things will be reversed. If profit is distributed, capital balance increases, that capital is credited in the journal. But loss जब शेयर होगा सर, कैपिटल बैलेंस तो घटेगा, मतलब कैपिटल बैलेंस तो डिक्रीज करेगा. इन दैट सिचुएशन क्या होगा?
सर कैपिटल को डेबिट करना है सर, मतलब एस कैपिटल को डेबिट करना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कौन सा रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करना है सर, ओल्ड रेशियो से। ओके, सो इन द टाइम ऑफ एडमिशन 3 पॉइंट्स वी हैव टू फोकस। पहला क्या था सर, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, के एडमिशन के बाद नया रेशियो क्या होगा, और ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो से नया पार्टनर को सैक्रिफाइस किया है। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फोकस। द सेकेंड थिंग, सर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है इन जनरल, क्या हम लोग सीखे सर कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो ही हैज सपोज टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बांट लेगा अपनों में, और अगर नहीं लाता है तो कोई बात नहीं सर, उनका करेंट अकाउंट में डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। थर्ड पॉइंट जो हम लोग सीखे सर आज, कि अगर एडमिशन के टाइम में बैलेंस शीट पे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस रहेगा सर, इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है सर, कौन सा रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। एंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि अगर ये जनरल रिजर्व या पीएल का क्रेडिट बैलेंस या लॉसेस अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एडमिशन के टाइम पे, तब क्या प्रॉब्लम होता है सर, प्रॉब्लम यही होता है सर, इस जनरल रिजर्व में जो अमाउंट है, जो नया पार्टनर आ रहा है, हालांकि वो हकदार नहीं है, लेकिन अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फ्यूचर में वो भी क्लेम करेगा कि जनरल रिजर्व में मेरा हिस्सा है, 1/5 मेरे को दो, बट ओरिजिनली तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट आवर अमाउंट। सो बेटर उसके आने से पहले और एट द टाइम ऑफ कमिंग एज अ न्यू पार्टनर, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस है जिसका हकदार ओल्ड पार्टनर है, उनमें बांट दो। इज दिस क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट आई विल डिस्कस, समटाइम्स इन द सम्स it is mentioned general reserve has a 1 lakh, but the old partners have decided to maintain this value। देखो अगर ये जनरल रिजर्व जो दिख रहा है यहां पे सर, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, देन तो जनरल रिजर्व गेट्स कैंसल्ड, ये जनरल रिजर्व और बैलेंस शीट में नहीं आएगा सर, ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है पार्टनर्स पे। बट कभी कभी सम्स में स्पेसिफिकली ये बोल देता है सर कि जनरल रिजर्व जो है वो एडमिशन के बाद भी वो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, मतलब तो ओल्ड पार्टनर्स वांट टू मेंटेन दिस वैल्यू एज इट इज। सर एज इट इज रखने से कैसे होगा सर, तब तो वही प्रॉब्लम आ जाएगा ना, अगर ये बैलेंस एज इट इज रहेगा तो नया पार्टनर तो फ्यूचर में इसके ऊपर क्लेम लगाएगा ना सर, उसका जो रेशियो है 1/5, ही विल बी क्लेमिंग 1/5 फ्रॉम दिस जनरल रिजर्व, तब तो वही प्रॉब्लम रह जाएगा सर। सो क्या है सर, अगर ये डिसीजन ओल्ड पार्टनर्स हैव टेकन कि हाँ जनरल रिजर्व को ओल्ड वैल्यू कैरी करना है, इसको राइट ऑफ नहीं करना है, इन दैट सिचुएशन इस जनरल रिजर्व में नया पार्टनर का कितना हक, मतलब कितना वो क्लेम कर सकता है इन फ्यूचर, दैट अमाउंट यू कैलकुलेट फर्स्ट। सर 1 लाख के ऊपर अगर 1/5 करोगे तो इन फ्यूचर द न्यू पार्टनर कैन क्लेम 20,000 अमाउंट। तो एक काम करते हैं सर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे सर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट नया पार्टनर इन फ्यूचर क्लेम करेगा सर, अभी उसको कैपिटल को डेबिट करके आई एम जस्ट रिड्यूसिंग हिज कैपिटल बैलेंस। बात तो एक ही है सर। ओके, इन फ्यूचर सी कैन क्लेम 20,000, अभी एक काम करो उसका कैपिटल को डेबिट कर लो। सो कैपिटल सी का कैपिटल डेबिट हो रहा है और ए एंड बी में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तब ये जनरल रिजर्व जो था एडमिशन के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा सर, उसमें जनरल रिजर्व एज इट इज रहेगा। इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया सर, सी जो पैसा फ्यूचर में क्लेम करेगा इस रिजर्व अमाउंट से, वो अमाउंट ऑलरेडी वी हैव डेबिटेड फ्रॉम सी, सो मैटर्स रिमेन सेम, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। So this is ultimatum about this treatment of reserve in case of admission. So when you will solve the sums, read it carefully कि sums में क्या लिखा हुआ है। In general अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर ये लिखा हुआ है कि नहीं जो रिजर्व है या जो लॉसेस है सर वो एज इट इज रहेगा, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तब क्या करना है सर, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। क्या एडजस्टमेंट एंट्री, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको डेबिट करो और जो ओल्ड पार्टनर्स उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो से क्रेडिट करो, बस। अब नया बैलेंस शीट जो बनेगा सर वहां पे जनरल रिजर्व एज इट इज दिखाओ। इज दिस क्लियर? दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट आई विल डिस्कस, एडमिशन के टाइम में और क्या देखना है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज
where the accountant has to concentrate revaluation of assets and liability. Sir, I will discuss assets and liability. सर ये रिवैल्यूएशन क्या होता है सर? एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का मतलब जरूरी क्या है? व्हाई इट इज नीडेड सर? दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो आई टोल्ड यू कि देयर इज ऑलरेडी अ बैलेंस शीट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर. इन माय एग्जांपल हु आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर? ए एंड बी. सो मान लो कि बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हुआ है सर उसमें कैपिटल बैलेंस दिख रहा है ए एंड बी का. सर रिजर्व भी दिख रहा है सर, जनरल रिजर्व मान लो है. और क्या है सर? लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मान लो कि क्रेडिटर्स है 20,000 का टोटल ऑफ लायबिलिटी. और एसेट साइड में क्या है? मशीन है, मान लो 1 लाख का मशीन है. फर्नीचर है 80,000 का और कैश है 20,000 का. दिस इज द एसेट साइड. सो दिस इज द बैलेंस शीट. दे आर प्रेजेंटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022 और इस डेट को सी का एडमिशन हो रहा है. So sir, already there are certain assets and liability existing in the old balance sheet. Now new partner is coming in. The rule is this कि whenever a new partner is admitted, balance sheet में जो भी assets या liability, outside liability दिख रहा है सर, इनका अगर रिवैल्यूएशन पॉसिबल है तो रिवैल्यूएशन कर लो और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से बांट दो. सर आई विल बी टेकिंग एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मान लो मशीनरी का ये बुक वैल्यू यहां पर कितना दिख रहा है? 1 लाख. सर बुक वैल्यू मींस सपोज दिस मशीन वाज परचेज 5 years ago फॉर 1,50,000 और डेप्रिसिएशन करते करते आज इसका वैल्यू हुआ है 1 लाख. एंड रिकॉर्डिंग वैल्यू फॉर दिस एसेट्स वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस से हम लोग खरीदे थे सर उसी प्राइस को दिखाएंगे. मार्केट में चाहे इसका जो भी प्राइस चल रहा है सर, 1.5 लाख से हम लोग खरीदे थे, डेप्रिसिएशन होकर 5 साल बाद इसका वैल्यू कितना हुआ है? 1 लाख. ओके. अब एडमिशन हो रहा है सी का 31 दिसंबर 2022 को. इस दिन मार्केट में अगर ये मशीन तुम बेचने जाओगे तो तुम्हें 1,20,000 मिलेगा. मतलब इसका रिवैल्यूड अमाउंट कितना है सर? 120. बुक वैल्यू कितना है सर? बैलेंस शीट में दिख रहा है 1 लाख. बट इफ यू वांट टू सेल इट इन द मार्केट इट कैन कैरी अ वैल्यू ऑफ 1,20,000. So there is a profit. A profit is lying therein. मशीन का वैल्यू रिवैल्यूएशन होने से 20,000 प्रॉफिट होगा. तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना 20,000 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसको कैलकुलेट करना है सर. नॉट ओनली फॉर दिस मशीन, ऑल एसेट्स वट एवर इज देयर इन द बैलेंस शीट लाइक फर्नीचर है, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, सबका रिवैल्यूएशन अगर पॉसिबल है तो उस रिवैल्यूएशन करो. किसी का वैल्यू बढ़ेगा, किसी का वैल्यू घटेगा और उसमें से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है सर दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज पर द ओल्ड रेशियो. सर व्हाई इट इज नीडेड सर? ये रिवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है सर? मान लो कि मशीन का वैल्यू 1 लाख है, मार्केट में अगर बेचने जाओगे तो कितना मिलेगा? 1,20,000. बट यू डिड नॉट रिवैल्यू इट, यू टुक सी एज अ न्यू पार्टनर. और 1 साल बाद जब मार्केट में ये बेचने जाओगे, मान लो कि ये 10,000 प्रॉफिट लाया, तब तो सी बोलेगा कि भाई मैं भी तो पार्टनर हूं, इसमें मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा है, मेरे को भी इसमें से दो. सो दैट इज नॉट फेयर बिकॉज ये जो 20,000 या 10,000 का जो भी प्रॉफिट हो रहा है सर, ये तो दे बेसिकली द ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस अमाउंट. सो व्हाई द न्यू पार्टनर विल बी क्लेमिंग दिस अमाउंट? दैट्स व्हाई सर वेदर इट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, एग्जिस्टिंग एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो, उसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है सर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से बांट दो. इज दिस क्लियर? व्हाई रिवैल्यूएशन इज नीडेड सर? सर दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट. अगर लॉस भी होगा सर तो लॉस भी तो लेना पड़ेगा नया पार्टनर को. सो व्हाई द न्यू पार्टनर विल टेक द लॉस? न्यू पार्टनर विल से योर लॉसेस यू डील विद इट, व्हाई शुड आई कैरी? सो प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हिसाब से आता है सर उसको ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड रेशियो से बांटना है. Now the question is, sir, how we will prepare the revaluation account? I'm just taking an example. ये जो सिचुएशन, मशीन का बुक वैल्यू कितना है? 1 लाख. मार्केट पे इसका वैल्यू अभी कितना हो रहा है? 1,20,000. So there is a increase in the value of assets. Sir, revaluation account what we prepare that's a nominal account. अगर किसी ट्रांजैक्शन से रिवैल्यूएशन से फर्म का प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होता है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन से फर्म को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है. तो 1 लाख का जो मशीन था उसका अगर 1,20,000 उसका अगर रिवैल्यूड अमाउंट होगा तो इसमें तो 20,000 का प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है.
तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है कितने से? जो अमाउंट बढ़ रहा है सर, जितना इंक्रीज हुआ है 20,000। फर्नीचर कितना है? 80,000। मान लो कि इंफॉर्मेशन दिया होगा कि फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है 10%। इट मींस द फर्नीचर वैल्यू इज डिक्रीजिंग। फर्नीचर वैल्यू हियर इट इज 80,000, value is decreasing by 10%, so the value decreases by 80,000 into 10%, 8,000. So if the furniture value decreases, that's a loss to the firm or profit to the firm? Definitely loss. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सर, एक एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये तो फर्म के लिए लॉस है। तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को जर्नल में क्या करेंगे? डेबिट, बिकॉज रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री होगा क्या सर? रिवैल्यूएशन को डेबिट करके फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। कितना सर? जितना कम हुआ है सर, द अमाउंट बाय विच द फर्नीचर हैज डिक्रीज्ड, दैट इज 8,000। इज इट क्लियर और नॉट? सो सर फॉर एनी रिवैल्यूएशन, इफ यू फाइंड इट्स गिविंग प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, और इफ इट इज गिविंग लॉस, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। Oviru, you say one thing, creditors is of 20,000. It's the book value which is available in the balance sheet. Now it's given that a creditor of 5,000 need not to be paid. A creditor of 5,000 need not to be paid. एक 5,000 का क्रेडिटर है जिसका भी पेमेंट नहीं देना है सर, किसी भी कारण से उसको पेमेंट नहीं करना है सर। तो मतलब क्रेडिटर कम हो रहा है तुम्हारा, 20,000 था अभी 5,000 कम हो रहा है। तो क्रेडिटर अगर 5,000 का कम हो रहा है तो इसमें फर्म का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यू डिसाइड। हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग प्रॉफिट हो रहा है? सर क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, 20,000 देना था किसी को, अब वो बोल रहा है कि 5,000 देना नहीं है सर। सो लायबिलिटी कम हो रहा है बिजनेस का। तो लायबिलिटी अगर कम होगा तो बिजनेस पार्टनर शुड बी हैप्पी फॉर दिस कि डोंट हैव टू पे। इफ आई से डोंट हैव टू पे द फीस, विल यू बी हैप्पी और नॉट? Your liability is getting off, so definitely you will be happy that that's your profit. So liability अगर कम हो रहा है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो जर्नल क्या होगा? अग्री creditors of 5,000 need not to be paid. What entry we will pass? It's giving profit to the firm, and just now I told you कि अगर प्रॉफिट होता है तो किसको क्रेडिट करना है सर? रिवैल्यूएशन को। So what should be the journal entry? Creditors account debit to revaluation account. And if the value of creditors increases, that's a loss. Then revaluation to creditors. Not getting Aviru? Clear? So one more example I will give you. मान लो asset side में stock है sir 80,000. Now below it's given कि stocks to be revalued at 90,000. Say what's happening here? Stock is to be revalued at 90,000. The value given in the balance sheet is 80, and at the time of admission, stock is revalued at 90,000. First, you say the firm is making profit here or loss? Balance sheet पे कितना value है सर? 80,000. But it's given कि it's revalued at 90,000. जो 80 था अभी उसका वैल्यू कितना हुआ है सर? 90. तो इसमें फर्म का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि सर एसेट्स 80 का एसेट्स अभी इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 90,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है वैल्यू? 10,000। जर्नल क्या होगा बोलो सर? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। सर प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है सर, और लॉस होने से रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। व्हाई सर? बिकॉज रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। Is it clear? Vaishali, suppose one more information is there. Outstanding expense. There is an outstanding bill for repair, rupees 500. Sir, there is no outstanding bill in the balance sheet. एक नया liability generate हो रहा है, बैलेंस शीट पे था नहीं सर, लेकिन एडमिशन के टाइम में पार्टनर से कमिंग टू नो कि हाँ हम लोग को एक आउटस्टैंडिंग बिल देना है 500. सो लायबिलिटी इज एक्रूइंग, अ न्यू लायबिलिटी इज जनरेटेड इन द बिजनेस. तो वैशाली विल इट बी लॉस टू द फर्म और प्रॉफिट टू द फर्म? डेफिनेटली सर, एक नया लायबिलिटी अगर जनरेट हो रहा है तो अचानक से एक लायबिलिटी आ रहा है, देना है पैसा, तो ये फर्म के लिए लॉस है.
जर्नल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल. इज दैट ओके? हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन? सिर्फ ये सोचना है कि फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा प्रॉफिट, लायबिलिटी डिक्रीज प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज लॉस, लायबिलिटी डिक्रीज प्रॉफिट. सिर्फ सोचना है सर. प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को जर्नल में क्रेडिट में लिखेंगे और अगर लॉस होगा तो डेबिट में. सर कैन यू क्रिएट द रिवैल्यूएशन अकाउंट? वेरी सिंपल सर. इफ वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब लेजर अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है सर, वेरी सिंपल सर. व्हाट हैपेंड? सर मशीन था 1 लाख, अभी उसका रिवैल्यूएशन कितने में हो रहा है? 1,20,000. तो कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है सर? 20,000. प्रॉफिट है. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखना है सर? बाय मशीनरी अकाउंट 20,000. स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ था सर? 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, लॉस हुआ था. किस साइड में लिखना है सर? डेबिट साइड में. स्टॉक में लॉस हुआ था ना, प्रॉफिट हुआ था ना, तो भी क्रेडिट में लिखना है. बाय स्टॉक 10,000. और क्रेडिटर्स जो था 5,000 देना नहीं है सर, दैट वाज आल्सो प्रॉफिट. सो बाय क्रेडिटर्स इन द क्रेडिट साइड 5,000, 500. एंड दिस ये आउटस्टैंडिंग बिल, नया लायबिलिटी जो जनरेट हुआ, दैट्स अ लॉस. सो 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर. रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा कितना? 500. सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस कमिंग इन नेट? सर 20, 30, 3,500 इज द क्रेडिट टोटल. अब 3,500 से 500 लेस करेंगे तो कितना बैलेंस आ रहा है? 30,000. ये रहा तुम्हारा नेट प्रॉफिट. मतलब किसी का वैल्यू बढ़ा है जिसके कारण प्रॉफिट हुआ है, अगर किसी के कारण लॉस हुआ है, अल्टीमेटली लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है सर? 30,000. व्हाट शुड बी डन विद दिस 30? शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है ना? सो 2 पार्टनर्स कैपिटल in between A and B, this 30,000 will be distributed as per their old ratio. Got it sir? So sir finally I can conclude कि at the time of admission चारों सिचुएशन में हम लोगों को ध्यान देना है सर. पहला क्या था सर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सेकंड था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड था सर ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. एंड फोर्थ वन वी हैव कंसंट्रेटेड, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. One more item is there, but that I will discuss later on. Now, what we will do, taking these 4 aspects together, ये calculation of new and sacrificing ratio, treatment of goodwill, undistributed profits and losses, or a revaluation, taking all these things together, we will do a sums. Therein we will see a balance sheet is given, a story will be given to you. Like ये partner था, नया partner इसको ले रहा है, ये revaluation हुआ है, और जनरल रिजर्व वगैरह कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस विल बी देयर, हाउ टू ट्रीट दैट, और गुडविल ट्रीटमेंट. टोटल स्टोरी, अ कंप्लीट सम्स विल बी गिवन टू यू एंड हाउ टू सॉल्व दैट. वी विल बी डूइंग द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज वी विल बी प्रिपेयरिंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट. ठीक है? नाउ वी विल डू अ सम्स. सो लेट्स कम टू द बुक.